Good morning, dear students. So today we are going to begin our English class with the chapter number 4, the ashes that made the trees bloom. But before that, let's continue with the tradition of our class, that is idiom of the week. So idiom of this week is be thin on the ground. So if things are thin on the ground, that means there are not many of them. इसका मतलब है कि वो ज्यादा अमाउंट में अवेलेबल नहीं है, especially within a particular area, and that too if we are talking about a particular area, तो उस particular specific area में वो चीजें in abundance they are not available, right? So it will be clearer to you with the help of examples. So first example is greengrocers shops are rather thin on the ground in this part of the town. अब टाउन के इस पार्ट में जो ग्रीन ग्रोसर्स की शॉप्स हैं, दे आर थिन ऑन द ग्राउंड, मींस दे आर नॉट अवेलेबल इन a lot of number. I mean they are scarce, मतलब कम है, थोड़ी है. ठीक है. Next is qualified mechanics are thin on the ground these days, so they usually earn very high wages. तो qualified mechanics बेटे कम मिलते हैं, they are thin on the ground. तो उसकी वजह से उनकी मोनोपोली है and they earn a higher wages. They demand higher wages from us. So this is the meaning of be thin on the ground. So from tomorrow onwards, it is your turn to give me examples for the same idiom. I hope you will be ready with your examples, right? I can ask any one of you. Yes, bete. We are going to read a chapter, the ashes that made the trees bloom. But before that, I want you to watch this video. Professor who used to teach at the University of Tokyo. Once there was a professor who used to teach at the University of Tokyo. The professor used to take a train every day to go to the university. Each day, his dog would accompany the professor to the train station when he left for work. Upon returning, the professor would find the dog patiently waiting for his master and wagging its tail. This happy routine continued for a few years until one fateful day. The professor fell ill at work and died before he could return home. As usual, the dog waited at the train station that day for his master to return back. However, seeing that he wasn't coming back, the dog waited till night fell and returned back home. The next day, the dog went back to the train station again, waiting for his master to come back. He patiently waited till sunset and then returned back home. The dog was so devoted to the professor that he continued to visit the train station every day for the next 10 years until he died waiting for his master. The people who passed the loyal dog each day were so touched by his story that they stood up a statue in his honor. We should take a lesson from this story ourselves. We claim to believe in Allah subhanahu wa ta'ala and follow the examples of the Holy Prophet and the Ahlul Bayt. All of us have taken an oath to be loyal to our master. Now, we should look deep in ourselves and check to see how much love we really have for Allah, the Prophet Muhammad, and the Ahlul Bayt alayhim salam in our hearts. Yes, Peter, did you watch the video? Yes, Yes. ma'am. So raise your hands Yes, who just yes, want ma'am. to tell his experience of watching the video and what did he get from the video. What did you get from the video? What was the video about and what lesson do you get from that video? Yes, hurry up. Yes, Tanvi. Hmm? Tanvi? Ma'am, in that video, there was a dog which was very faithful to its master. He always, the dog always came to the train station to pick up his master. And when his master died, he went to train station every day looking for him that he will come one day. Okay, Tanvi, mute yourself.
बेटे पीछे से बहुत आवाजें आ रही हैं, प्लीज डोंट अनम्यूट योरसेल्फ. Yes, Dhruv, you tell me. Ma'am, in the story, it states that the dog was very loyal towards his master and he cared for him every time. Yes, he cared for his master. है ना? So it has been observed that dogs are the most faithful animals on the earth. ऐसे ही है ना? और 6 में भी हमने चैप्टर किया था, how did the dog become a new, how did the dog find a new master for himself. So उसके बाद he has been a faithful animal ever and ever on the earth. So this is the story that we are going to read. The ashes that made the trees bloom is about an old couple and their pet dog only. तो इसमें भी dog की ही बात की गई है. That is why I just showed you that video, so that there is a little bit introduction about the story. As he cared about his master that we just watched in the video, in the same way this dog who was living with that old couple, he also cared for his masters, cared for that old couple. And in the process of when we'll read the story, in the process of being read the story, what happens, he just dies, वो मर जाता है. और उसके बाद भी how does he help the old couple that has been described in this poem? He was so loyal to his master that, like that dog that we watched in the video, he used to accompany his master to the work and return with him only. उसके साथ ही जाता था, उसके साथ ही वापस भी आता था. I mean, he could do anything for his for that old couple. So this is a story about an honest and hardworking old couple and their pet dog. The neighbors are troublesome. So अब यहाँ एक entry होती है villains की, जैसे फिल्मों की story में होती है. So there is an entry of villains, that is their neighbors. They are troublesome and the dog dies a sad death. As I told you right now, he dies a sad death because of those neighbors. They just put him to death. उसको पीट के मार के वो उसको मार देते हैं. The spirit of the dog gives solace and support to his master in unexpected ways. But after dying also, he does not forget his masters, and he tries to do everything that he could do for them. And how does he give them solace? Solace means comfort. कैसे उनको comfort देता है, कैसे उनको राहत प्रदान करता है. And how does he support that old couple in an unexpected way? Means वो जो उसके उनको comfort देने का जो तरीका है, that is really very interesting and that is also unexpected. And this is really going to be a very interesting story. As we'll continue reading the story, you will find it really interesting one, right? So the name of the chapter is The Ashes That Made Trees Bloom. Let's read it now. In the good old days of the daimyos in 19th century Japan was known as wealthy landowners. 19th century की बात की गई है and this is a Japanese story. Because we are reading this word, बेटे कोई ऐसा word उस chapter में include कर दिया जाता है जिससे आपको पता चलता है कि वो story कहाँ की है. Like in chapter Taro's Reward in 6th standard, we read the word sake. Do you remember, बेटे? Yes, ma'am. Yes, So ma'am. sake was also a Japanese word. Here daimyos is also a Japanese word and its meaning is wealthy landowners, जो बहुत पैसे वाले हैं. So in the good old days of the daimyos, there lived an old couple whose only pet was a little dog. They didn't have any child. They just lived with their little dog pet and he was like a child to them. Having no children, they loved it as though it were a baby. It is referred to dog here. बेटे यहाँ dog को it बोला गया है. So वो
क्योंकि उनका बच्चा नहीं था, सो वो उसको ऐसे ही प्यार करते थे जैसे कि वो उनका अपना बेबी हो। द ओल्ड डेम, डेम इज द एल्डरली वुमेन, जो बूढ़ी औरत थी। कपल में क्या क्या होता है, एक आदमी और एक औरत। सो जो वो बूढ़ी औरत थी, मेड इट अ कुशन ऑफ ब्लू क्रेप, क्रेप को हम क्रीप, CREPE, जो आजकल क्रेप बोला जाता है, उसने उसको कुशन बना के दिया था। एंड इट इज रियली अ सॉफ्ट स्टफ, क्रेप जो होता है लाइक सिल्क, सिल्क की तरह एक फैब्रिक होता है, स्टफ होता है। एंड दैट old lady made a cushion of blue crepe for his little dog. And at meal time, Muko, now who is Muko? Ma'am, the dog. The dog. The dog. For that was its name. For that was its name. और जो मुको था, मील टाइम पे would sit on it. मील टाइम पे वो इसके ऊपर बैठता था, अपने ब्लू क्रेप कुशन के ऊपर, बिकॉज इट वाज रियली सिल्की एंड सॉफ्ट, एज स्नग एज एनी कैट। स्नग होता है अपने आप को कंफर्टेबल कर लेना। तो वो जैसे बिल्लियां आपने देखा वो उनकी जो हिंड लेग्स होती हैं, वो उसको ऐसे अपने अंदर खींचकर आराम से कैसे बैठी होती हैं। हैव यू एवर नोटिस देयर सिटिंग पोस्चर? कैट्स का सिटिंग पोस्चर देखा ना आपने? Yes, तो वो ma'am. कैट्स डॉग्स भी हाँ। वैसे बैठते हैं। तो वो डॉग भी उन्हीं कैट की तरह अपने आप को, साइड पे देखिए। हाँ जी, तो वो डॉग भी अपने आप को, मुको भी अपने आप को किसी बिल्ली की तरह अपने आप को उस ब्लू कुशन के ऊपर स्नग करता था। स्नग होता है किसी चीज के अंदर, आई मीन उसको अपने इर्द गिर्द लपेट लेना या उसको अपने ऊपर लाद लेना, मतलब कि अपने आप को कंफर्टेबल कर लेना उस पोजीशन में। The kind people fed the pet with tidbits of fish. Tidbits means small pieces. Tidbits means small pieces. तो वो जो दयालु लोग थे, वो जो बूढ़ा आदमी और औरत थे, वो अपने पेट को स्मॉल पीसेस ऑफ फिश देते थे फ्रॉम देयर ओन चॉपस्टिक्स। जब वो खाना खुद अपने बोल में चॉपस्टिक्स के साथ खा रहे होते हैं, डू यू नो व्हाट इज चॉपस्टिक्स? मैं जिससे हम नूडल्स जापानीज जैसे we use fork स्टाइल to eat noodles etc, but they use chopsticks. These are wooden thin sticks and they generally hold it with their two fingers. पता नहीं कौन से तरीके से वो पकड़ते हैं। and they can eat even rice grains with it. वो राइस भी उसके साथ बहुत तेजी के साथ खा लेते हैं। so chopsticks राइस हाफ कुक्ड होते हैं। ओके चलो हाफ कुक भी सही, बट इवन देन इट्स वेरी डिफिकल्ट टू होल्ड अ स्मॉल ग्रेन बिटवीन दोस चॉपस्टिक्स, है ना। चलिए, तो वो चॉपस्टिक्स भी हम वो जापान में यूज की जाती हैं। एंड ऑल द बॉइल्ड राइस इट वांटेड, मींस कि वो जो खुद खाना खा रहे होते हैं उसी में से अपने पेट को भी देते हैं। व्हाई? बिकॉज दे used to see that dog as their own child. Thus treated, the dumb creature loved its protectors. तो क्योंकि उसको इस तरह से ट्रीटमेंट मिलती थी, dumb means speechless, जो बोल नहीं सकता। Obviously dogs cannot speak our language. They can do only bow या only they can bark, but they cannot speak like us. So it is said that it is a speechless creature. Loved its protectors. Protectors means उसको बचाने वाले, उसको पालने वाले। That old couple. Like a being with the soul. Beta, being with the soul is a phrase. Being with soul is a phrase. Kindly underline this phrase. Its meaning is like a human child. Like a human child means showing emotion. वो अपने इमोशंस इस तरह उनको दिखाता था, इतना प्यार उनको करता था जैसे कि वो एक इंसान का बच्चा। ठीक है। The old man, being a rice farmer, went daily with hoe or spade. बेटा what are hoe and spade? हमने बहुत बार पढ़ा है spade hoe, पता है ना क्या होते हैं ये? जिससे खेती होती है। हाँ जी। Means these are tools. मिट्टी खोदते हैं। फार्मिंग टूल्स हैं बेटे ये, जिसके ऊपर लॉन्ग हैंडल लगा होता है, जैसे कुल्हाड़ी के ऊपर एक्स के ऊपर लगा होता है, उसी तरह से जो स्पेड और वो है वो होते हैं
और वो ओल्ड फार्मर बीइंग अ राइस फार्मर, वो एक राइस फार्मर था, तो वो रोज ही हो या स्पेड के साथ अपने खेतों में जाता था, वर्किंग हार्ड फ्रॉम मॉर्निंग, एंड he was a hard working man, so he used to work right from the morning until Otentosama. This is again a Japanese word used for sun, as the sun is called, until Otentosama had gone down behind the hills. When we say the sun had gone behind the hills, that means, what is its meaning? To go behind the hills. When sunset. शाम हो जाती है Yes, sunset. बेटे जरूरी नहीं है कि हमने sunrise and sunset की words use करने. We can say the sun climbed, है ना? It just climbed from behind the hills and again it just went down behind the hills. Sunset. तो वो रात को सूरज छिपने तक काम करता था. Every day the dog followed him to work, like the dog that we watched in the video, है ना? So every day the dog followed him to work, never once harming the white heron. बेटे heron क्या होता है? जल्दी बोलो, थोड़ा सा बोल दिया करो बेटे. किसी को भी नहीं पता है? No, ma'am. Heron is a large fish, eating wading bird with long legs. ठीक है, तो लार्ज फिश विद लॉन्ग लेग्स होती है जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े खाती है, राइट? जस्ट वेट बेटा, इसमें स्क्रीन विजिबल? बेटे इसमें स्क्रीन विजिबल? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. हार्मिंग Yes, द व्हाइट ma'am. हेरन, जो छोटे छोटे व्हाइट हेरन्स हैं, कभी उनको भी वो कोई हार्म नहीं करता था, अदरवाइज ही कुड ईट देम. That walked in the footsteps of the old man to pick up the worms. जो छोटे छोटे worms को पकड़ने के लिए उसके पैरों के साथ साथ चलती थी या उसके पैरों के पास होती थी. He never harmed them also. For the old fellow was patient and kind to everything that had life. That had life means जो भी living things है, जिनके अंदर भी जान है. That old man was very kind to everything that had life. जिनके अंदर जान थी वो सबके लिए बड़ा दयालु था. Be it birds, be it animals, be it human beings, means everything, right? So, and often turned up a sword. Turned up, see, turned up means dug up, खोदना. Sword means the surface of the earth. The surface of the earth. तो वो surface को खोद देता था on purpose, intentionally, to give food to the birds, ताकि वो पक्षियों को खाना दे सके. One day the dog came running to him, putting his paws against his legs. अब एक दिन क्या हुआ, वो जो डॉग था दौड़ता हुआ आया, उसने अपने जो paws थे, paws means पंजे, he just put his paws against his legs. यहाँ his का मतलब है डॉग के पास, यहाँ his का मतलब है बूढ़े आदमी की टांग. तो उसने अपने जो पंजे थे बूढ़े आदमी की टांगों के अराउंड उसने ऐसे लॉक कर लिए, एंड मोशनिंग विद हिज हेड टू सम स्पॉट बिहाइंड. स्पॉट मीन्स बेटे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पॉट? प्लेस. और एक पीछे की तरफ इशारा करके एक जगह दिखाने लग गया. अब द ओल्ड मैन एट फर्स्ट थॉट हिज पेट वाज ओनली प्लेइंग. पहले तो उसने सोचा कि ये सिर्फ खेल रहा है, एंड डिड नॉट माइंड इट, और बिल्कुल भी उसको कोई उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी. बट द डॉग केप्ट ऑन व्हाइनिंग एंड रनिंग टू एंड फ्रो. But the dog kept on whining. Whining means आवाजें निकालना, high pitched cries. तो जोर जोर से वो जैसे चीख रहा था. And running to and fro means backward and forward for some minutes. वो कभी आगे दौड़े कभी पीछे जाए, क्योंकि वो उसको जगह दिखाना चाहता था जो पीछे रह गए थे. तो वो कुछ मिनट्स ऐसे ही करता रहा.
Then the old man followed the dog a few yards to a place where the animal began a lively scratching. हाँ जी बेटे, इसका मतलब है फिर वो बूढ़े आदमी ने अपने डॉग को फॉलो किया फॉर अ फ्यू यार्ड्स. यार्ड्स मींस फॉर अ फ्यू स्टेप्स टू अ प्लेस, एक ऐसी जगह पर where the animal began a lively scratching. What is scratching? मैम जमीन पे अपने मैं जमीन खोदना. खरोचने लगा. तो अपने जमीन खरोच. बड़ी जोर से उसको खोदने लगा. Thinking it was possibly a buried bone or bit of fish. अब बूढ़े आदमी को क्या लगा, मे बी यहाँ कोई हड्डी या फिश का कोई टुकड़ा इसके अंदर हिडन है. Buried means it is not buried but it is buried, hidden underground. You can listen to the pronunciations on Google also. It is buried. उसको ऐसे लगा कि मे बी ये कोई बोन या बिट ऑफ फिश है. The old man struck his hoe in the earth. तो बूढ़े आदमी ने भी क्या किया, अपनी जो हो थी उसको स्ट्रक किया, हिट किया उस जमीन के टुकड़े के ऊपर. When lo, a pile of gold gleamed before him. Gleamed means shone, chamakna, shine, shone, shone. Shone is the second form of shine. So उसके आगे एक सोने का ढेर चमकने लगा. Dog को उस जगह का पता चल गया because their smelling power is very good. Their कहते होते हैं ना सिक्स्थ सेंस इज वेरी गुड. तो उसको पता चल गया कि इसके अंदर कुछ है. दैट इज ही वाज जस्ट ट्राइंग टू शो दैट प्लेस टू हिज मास्टर. देखिए अब यहाँ पर जब उसने अपने स्पेड से या हो से उसको खोदा तो अ पाइल ऑफ गोल्ड वाज देयर. Thus in an hour the old couple were made rich. तो फिर एक ही घंटे में वो जो ओल्ड कपल था वो बहुत अमीर बन गए. The good souls bought a piece of land. उन्होंने जमीन का टुकड़ा खरीदा. Made a feast for their friends. Feast means party. अपने फ्रेंड्स के लिए पार्टी दी. And gave plentifully to their poor neighbors. And their neighbors were really very poor and he gave them plentifully. तो उसने बहुत ही ज्यादा अमाउंट में जो भी बन सकता था अपने पुअर नेबर्स को भी दिया. As for the dog, they petted him till they nearly smothered him with kindness. Petted होता है pat affectionately. जब हम पीठ पे बैक पे किसी को ऐसे हाथ बड़े प्यार से मारते हैं. और उन्होंने उस डॉग को इतने अच्छे से प्यार किया, पैट किया. Till they nearly smothered him. Smothered होता है अपने आप को ऐसे जकड़ लेना कि उसको सांस भी ना आए. To hug that there is lack of air. हमारे साथ भी ऐसे होता है ना कई बार, जो हमारे बड़े हमें बहुत प्यार करते हैं, हमें ऐसे हग करने की कोशिश करते हैं and they hug us so tightly that it is really difficult to breathe at that time. So उसके साथ भी ऐसे हुआ. उन्होंने अपनी काइंडनेस के साथ उसको बहुत ही ज्यादा स्मॉदर किया. Now in the same village there lived a wicked old man and his wife. Wicked means मैम बुरे. evil. बुरे विलेज में बुरे कपल भी रहते थे. Not a bit sensitive and kind. Sensitive means, what is the meaning of sensitive? to have some kind feelings. Ma'am, they Have are some feelings, emotions. They were not having any emotion and feelings, and they were not kind at all. Who had always kicked and scolded all dogs whenever any passed their house. And they used to kick the dogs and they used to scold the dogs if anyone used to pass in front of their house also. Hearing of their neighbors good luck, तो अपने neighbors की good luck के बारे में सुन के they coaxed the dog into their garden. Coaxed means pursued it. उसको provoke किया, उसको आने के लिए मजबूर किया, या उसको पुचकारा, या उसको कोई लालच दिया. Whatever they did, they just coaxed the dog into their garden. अपने garden में लेके आए and set before him bits of fish. और उसके आगे ऐसे fish रख दी and other dainties. Dainties means something good to eat. Means when you have something good to eat, आपके पास बहुत तरह की चीजें हैं खाने के लिए. Hoping he would find treasure for them. इस hope में कि वो उनके लिए भी treasure ढूंढ के लाएगा.
but the dog being afraid of the cruel pair, क्योंकि dog obviously he is aware of this thing that they are very cruel, क्योंकि जब भी उनके घर के बाहर कोई डॉग आ जाए या खड़ा हो जाए, they used to scold them. Would neither eat nor move, तो वो ना तो वो उन चीजों को खा रहा था और ना ही वो मूव कर रहा था. Then they dragged him out of doors. Drag means pulled, धकेल के ले जाना, खींच के ले जाना. फिर वो उसको खींच के डोर के बाहर ले गए, taking a spade and hoe with them. उन्होंने भी अपने साथ एक spade and hoe लिया. No sooner had the dog got near a pine tree growing in the garden than he began to paw and scratch the ground, as if a mighty treasure lay beneath. तो जैसे ही अभी डॉग एक पाइन ट्री के पास पहुंचा गार्डन में, तो क्या किया उस आदमी ने, then he began to paw and scratch the ground. तो उसने अपने पंजे से उस ग्राउंड को स्क्रैच करना शुरू कर दिया. As if a mighty treasure lay beneath. Mighty means huge, big, बहुत ज्यादा, बड़ा. Treasure means खजाना, beneath means under, जैसे कि उसके नीचे कोई खजाना दबा हो. Quick wife, hand me the spade and hoe. तो उसने अपनी वाइफ को बोला कि मुझे फटाफट से वो स्पेड और हो दो. Cried the greedy old fool as he danced with joy. और वो खुशी से नाचने लगा. So बेटे, I hope till it is clear. Whatever we have read till now, it is clear to you. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Have you noted down the Yes, ma'am. Have you noted down the Yes, ma'am. Yes, the ma'am. books? Okay. Yes, ma'am. चलिए, Yes, bye yes, for ma'am. now, and I'm going to paste attendance form in the chat box. Now we'll meet tomorrow.